सुबह मैम। सुबह मैम। हाँ, शुरू करें। हाँ, आप कर दीजिए। Good afternoon, participants. I welcome you to the second session of the 5th year of Faculty Development Program, and hope all these sessions have been very enlightening and they have enhanced your knowledge. And today in the second session, we have Dr. Bhuwan. He is Assistant Professor in the History Department at Satyavati College, Delhi University. And he will be speaking on new education policy, pedagogy, and Wardha scheme. I welcome Dr. Bhuwan. And without wasting any time, Bhuwan ji, आपको mic दे रहे हैं. भुवन जी अनम्यूट करें अपना माइक. Trying to fix the devices. Thank you Shubha ji, thank you Shivani, and Alok Pandey ji visible hai. Thank you Alok Pandey ji. Am I audible now? Yes sir. ऑडिबल है भुवन जी. Yes. शुभा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आलोक पांडे जी दिख रहे हैं यहाँ पे, और डॉक्टर शिवानी जॉर्ज who was in contact with me, and therefore yesterday I was told to participate, and I thought we should speak on new education policy. And once upon a time when Congress ministries were formed in as many as 8 provinces in India in 1937, there arose the question of local education. What should be the curriculum and the focus and the medium, the quality, because education formed the state subject, was under the state subject. उस समय में भी कुछ इस तरह की चर्चाएं हो रही थी, और उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे. But the primary focus would be on what are the major objectives of the National Education Policy 2020, followed by the emphasis on skills in the education policy, as well as in the Wardha scheme of 1937-38, and how we can, to some extent, correlate the two. Of course, if you ask a historian, he will be afraid of comparing such distant policies because the context is entirely different. India has grown or progressed many times more than we were in 1937. But the kind of objectives that the national education policy envisages, or the kind of focus on holistic education, behavior, physical work and other things, they do find some echoes, some parallels with what Gandhi taught in 1937-38 in the question of devising the education policy in the Congress-ruled ministries arose. I have prepared a short, of course the time was short, so I have prepared a very short PPT which I will share here, and then we will move along that PPT, and I'm sure at the end of the presentation there will be a lot of interaction with my colleagues who are participating in this workshop, in this faculty development program. Let me share the screen now. Let me, where is the presentation? Okay. Share. Okay. So I hope the slide is visible to everybody. Yes, it is visible. Yeah.
Yes, sir. Screen is visible. Yeah. When we devise educational policies, there are certain ways in which we go ahead. If you look at the history of independent India, there have been various educational policies at national level, education policies, which provide broader guidelines on how education for the coming years, or unless the next policy comes, need to move. They provide the basic philosophy and the vision. They do not necessarily provide the curriculum or the outlines of which subjects are to be taught, but they provide the priorities, the philosophy, the vision, the objectives, broader contours of the education policies are provided through the national education policies, which are then translated into national curriculum frameworks, and which then get translated into textbooks also. So these are the various stages through which education develops in this country, the primary, secondary, and the higher education. And there have been many policies. National Policy on Education, (1986), then 2020, और उसके पहले भी 1964-66 में भी था. And apart from these education policies, there have been committees which recommend special focus or special route to certain objectives. और वह यह भी देखती है कि जो पॉलिसी बनाई गई उसका मैपिंग कैसे कर सकते हैं. How have the objectives, to what extent the objectives of the policies been fulfilled? So there have been various committees. एक तो कुछ कमेटी बनती है जिससे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनती है, कुछ बीच में कमिटीज बने जो कि उसको एसेस करते हैं. What are the fundamental principles of NEP 2020? They almost form the preamble of the new policy. And if you look at the first fundamental principle, you will find its echo in the Wardha scheme also. Recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of each student. So the policy makers or the framers of the policy concluded that capacities of every individual will not be the same. But every individual, when we map through certain common criteria, then some student would appear to have excelled, while some student would have appeared to lag behind. So the policy says that don't evaluate or don't apply common criteria to every student. It points out that there will be unique capabilities of each student. So those unique capabilities need to be fostered, recognized, and this aspect is very significant because we teach students through a certain common curriculum. So some people are likely to lag behind, some people are likely to do better, but some people who have lagged behind in a particular curriculum, they may have certain innate capabilities which have not been properly accounted for or reflected upon. Another focus of this education policy is foundational literacy and numeracy. Elementary mathematics, elementary knowledge of numbers, and the ability to read and write. All the students who reach grade 3 or who have passed out of grade 3 should have mastered these abilities. So the policy framers, the policy makers felt
that for an individual to progress to higher classes, to secondary level, to the higher primary level, the student must have some foundational capability of some foundational literacy and knowledge of numbers. The third foundational principle or fundamental principle is that learners should have the ability to choose their learning trajectories. So there should be a lot of flexibility. उसमें जो curriculum आप डिजाइन कर रहे हैं, उसमें there should be sufficient flexibility or elasticity so that the learners have to choose. Learners have the ability to choose. Have the ability to choose their learning objectives, learning trajectories and program. तो आप इसी से निकल करके आ रहा है, where you say that there are innate abilities in every student. इसी से निकल करके आ रहा है that there should be sufficient flexibility and elasticity in learning so that the student can easily choose from the vast field of options available for him. Fourth is equally important. जो हमने डिवीजन कर रखा आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, no hard separation between arts and sciences. A person should have the ability, should have the flexibility, or should be given the choice of choosing from a wide range of options available before him. There should be no hard separation between arts and sciences, multidisciplinary and holistic education. The education should be multidisciplinary and holistic. Holistic, again, of course, we keep on using these terms time and again, but the primary meaning of holistic is that a person is not merely knowledgeable or an expert in the field, but he is also useful to the society. He is a good, responsible citizen. He is critical in his thinking. He can feel his responsibilities. So, an education should not be devised in a way which separates him from the rest of the society. It should be able to integrate him. And knowledge should not be merely for the sake of knowledge, for the sake of competition, for the sake of job, but knowledge should be primarily for the sake of building the individual. It also says promoting multilingualism. Now, the Western world or many other countries have recognized India's capability of teaching many languages to one student. A large number of students or large number of individuals in India know at least 3 languages. They can at least speak 3 languages. It also happens because we keep on moving from one place to another where some regional language is spoken, and we willingly or unwillingly pick up that language. So, but multilingualism or knowledge or familiarity of more than 1 or 2 languages gives better analytical and logical skills to the individuals. So, the strong skills in mathematics, skills in programming, skills in technology is also partly derived from the fact that people in India speak 2 or more languages. It also focuses on extensive use of technology. Now, technology is not the end, but technology is the means or the medium.
when we say we are running after technology, it is not after technology that we need to run. We should run after our objectives through the medium of technology. For example, we are using technology now to address a large number of fellow colleagues who may be sitting in different places of the country. What we are disseminating is certain kind of information, ideas about the new education policy. So technology is not the objective, not the end product, but technology is the means. So extensive use of technology to fulfill the objectives of the new education policy. Respect for diversity and local context. We are a very diverse nation, both in terms of culture and language. So when we go to a cosmopolitan place, we find people from different regions. We need to respect that diversity. When we go from one place to another place, we need to respect the customs. The context must be local. If we go to a certain place, if we look at a certain issue, we should not drag it out of context. The localization, the local ethos must be borne in mind. Some dress would be very common in certain areas. The same dress will not be acceptable to a certain area. So we have to respect the local custom and try to adapt ourselves to those customs. Equity and inclusion. An education system should be such that it permeates the idea of achieving equity. Education alone will not make things equitable, but the ideas and philosophies that are ingrained in textbooks and curriculum frameworks, they promote the objectives of equity and inclusion. Suppose I am teaching certain ideas in sociology or political science. I need to highlight those ideas which promote inclusion, which promote equity, so that the student is able to learn from these things and translate it in his life. The regulatory framework should be very light. Policies, decisions should be very resource, very transparent. But nobody should escape that framework. Therefore, it is written light but tight, a regulatory framework. If you look at the new education policy, the National Education Policy 2020, it begins its own justification or justification of its own objectives or recommendations by referring to the goal 4, SDG 4 of the 20 Sustainable Development Agenda for Sustainable Development adopted by India in 2015. This goal 4 of this Sustainable Development Agenda, the objective is that we should reach that level by 2030. India is a signatory to this global agreement. And this objective asks us to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. So the learning objective, the learning criteria, learning opportunity
should be available to everybody. So if you look at the education policy, it talks all the time about how to bring back in the net of education those people who have, for some reason, been left out, or who have progressed till certain class but dropped out because of certain regions, certain compulsions. So they are then brought back in the ambit of education, in the ambit of school education. So those aspects need to be focused on. It says to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination, with sound ethical moorings and values. The ultimate objective of learning is to develop good human beings. What would be the quality of that good human being? He would be capable of rational thought and action. He would be sympathetic, or he would develop certain kind of empathy with his fellow beings. He would show courage. Now, this is very important. He should not run away from situations which are contrary to what he had been thinking about, or which are uncomfortable. So he faces those challenges with courage and resilience, with certain kind of quality, with certain kind of perseverance, patience. Has scientific temper to be able to explain certain phenomena by involving scientific criteria, not being superstitious, not posing irrational faith in something. Faith, belief, and religion, fine, but superstitions, no. It also says that principle is based on the principle that education must develop not only cognitive capacities, such as critical thinking and problem solving of lower order, higher order, but also social, ethical, and emotional capacities and dispositions. A student who has passed out of the school or of the college has certain emotional capacities. He has certain social credits and certain ethical values in his mind. So all these things point towards a position where individual becomes useful to the society. If somebody is well educated, somebody has received a lot of degrees, but becomes a nuisance to the society, then there is some problem with the kind of education that was imparted to him. That should be borne in mind. If you look at the document and its interpretations at various places, it draws from the rich knowledge traditions of India, rich heritage that Indian culture and society has to offer, and then focus on what sort of education need to be given so that a holistic personality, a personality which is very much rooted in the Indian system, can be developed. It talks about the rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge. And it says the pursuit of knowledge, that is Gyan, wisdom, that is Pragya, and Satya, that is truth, was always considered in Indian thought and philosophy as the highest human goal. And the aim of education in our ancient past was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world or life beyond schooling, but for the complete realization and liberation of the self. So an educated human being can easily be shown to be different from an
uneducated human. There is an emphasis on multidisciplinary and holistic education. For a multidisciplinary world, one has to face the challenges of the world, the challenges the world throws. उसको भी ध्यान रखना है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हर तरह का ज्ञान होना जरूरी है, कूप मंडूक नहीं होना. It is not that if a person has studied history or political science, he doesn't have the fundamental knowledge of basic principles of science. Or if a person has just studied physics or chemistry, he should have also have a fundamental knowledge of the basic principles of political science, philosophy, history. He can't say, okay, I'm a physics graduate, I don't know ABCD of history. So it has to be multidisciplinary. Emphasis on conceptual understanding. This is very significant. We need to tell our students to avoid rote learning. And this is very common in social sciences and humanities. So we need to tell them to think about problems, discuss those problems in the classroom, to unearth the hidden meanings of statements. मैं तो अपने बच्चों को बार बार बोलता हूं कि बहुत ज्यादा किताबें मत पढ़िए, जो पढ़िए उसको ठीक से पढ़िए, उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए और प्रश्न कीजिए. Ask as many questions as possible to your fellow beings, to your teachers. There should be focus on creativity and critical thinking, on ethics and human constitutional values. All the values that are available in our constitution, whether among the fundamental rights or in the directive principles of a state policy or as fundamental duties. वहां जो भी वैल्यूज आ रहे हैं कहीं ना कहीं पे, उन वैल्यूज को हम किसी न किसी रूप में अपने करिकुलम में पढ़ाने के माध्यम से, या तो हम टेक्स्ट बुक में रखें या पढ़ाते वक्त पेडागोजिकली, those things should be brought to the fore. And how do we assess, how do we evaluate the performance of students? To go away from summative assessments. Now this is a big cost. It will take time to change the system of evaluation or assessment. It says that a regular formative assessment should replace summative assessment that encourages today's coaching culture. उस कमर्शियल इंटरप्राइज को कोचिंग कल्चर से हट करके रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जाना है, पीरियोडिकल फॉर्मेटिव असेसमेंट. There should be a respect for diversity and respect for the local context in all kinds of curriculum. यदि हम कहीं किसी करिकुलम में टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिखा रहे हैं, कहीं कुछ हम क्लासरूम में इलस्ट्रेशंस दे रहे हैं, कहीं हम किसी डिस्कशन में इंगेज कर रहे हैं, तो there should be respect for both the local context and as well as for the diversity. It should be borne by both the states and the center that education is a concurrent subject. Center may also devise policies, states can also devise policies. There should be full equity and inclusion as the cornerstone of all educational policies to ensure all students are able to thrive in the education system. Now, this is very important because the dropout rate is very high, especially at the school level. So, how to stop that dropout rate? How to bring students back into the system? A lot of provisions have been given, a lot of guidelines have been given in the new policy. And it says teachers and faculty are the heart of the learning process. So no amount of textbooks, no amount of policies, no amount of educational activities can replace
the teaching faculty, the quality of the teaching. So quality of the faculty members has to be ensured at every cost, and their regular skill upgradation is equally important. The new policy has also raised many significant pedagogical concerns. It says children not only learn, but more importantly, learn how to learn. बच्चे जब पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, उनको सिर्फ यह नहीं सोचना है कि मुझे कैसे पढ़ना है, इसके बाद कैसे पढ़ रहे हैं, उस प्रक्रिया को भी देखना है जिसके माध्यम से वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. The process of learning, they should be able to there is an urgent call. I will just mute myself. Sorry. The new policy says that we must move towards less and less content. Content बहुत ज़्यादा नहीं हो, but the idea should be to focus more and more on how to think critically and solve problems. Problem दिया उसको solve करना है, critical thinking में engage करना है, discussion करना है. How to be creative and multidisciplinary, how to innovate, adapt, and absorb new material in novel and changing fields. So, how the world is changing around them, how new ideas, how they are being surrounded by new ideas, we need to talk to the students about them. Pedagogy must evolve to make education more experiential. If we can connect what we are teaching with the individual experiences of the student or the class, the group of the students, then it has a deeper impact on the students. Then they can relate the kind of education that they are getting, the learning that they are getting, with the actions or with the current kind of events that they are witnessing around them. उससे यदि हम जोड़ करके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा उससे जल्दी कनेक्ट कर पाएगा, उसका फोकस एक्टिविटीज के तरफ जाएगा. So it has to be experiential, अनुभव जनक बातें होनी चाहिए. होलिस्टिक हो, इंटीग्रेटेड हो, फ्रैगमेंटेड लर्निंग नहीं हो. ऐसा नहीं कि आपने एक चीज बता दिया, दूसरा चीज को छोड़ दिया. It should be discovery oriented. Sometimes we need to prompt students to discover new things. आप खुद ढूंढ के लाओ जी, इस पर कुछ आप
तैयार करके लाइए, हम उसको डिस्कशन करें। आप कुछ खोजिए, कुछ पता कीजिए। लर्नर सेंट्रिक, discussion based, flexible, and of course we need to connect with the students to whom we are teaching. Students need to enjoy the classroom experience. At the higher level, once a student moves up the ladder in curriculum, the entire pedagogy will have an increased emphasis on communication. How we communicate, लिख करके भी, पढ़ करके भी, अपने एक्शंस के द्वारा, बोल करके, how we communicate our ideas. We can organize discussion or debating groups within the class where they debate on a particular issue. And there should be opportunities for cross-disciplinary and interdisciplinary thinking. The entire idea of a good pedagogy, especially in social sciences, is that we compel the students to think beyond their immediate discipline or beyond their immediate textual concerns, or within the text, if we can connect with more and more illustrations of their something with which they can identify, something with which they can make themselves familiar, or something which in their cognitive ability sounds absolutely fine. यदि आप ऐसा उदाहरण देंगे जिससे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, तो उनके लिए उसको ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल होगा. The curriculum, now what it says about the quality of the curriculum, उसमें बेसिक आर्ट्स क्राफ्ट्स होना चाहिए. There should be emphasis, talk about games, sports and fitness, languages, literature, साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में तो होना ही चाहिए, ताकि जो लर्नर है उसका सर्वांगीण होलिस्टिक विकास हो पाए, सर्वांगीण विकास हो पाए. It should also be fulfilling to the learner. वैक्यूम नहीं होना चाहिए. जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसको लगे कि उसको कुछ मिला है. हम यदि कभी कोई अच्छा क्लास करते हैं, किसी अच्छे टीचर का कोई अच्छे विषय पर क्लास करते हैं, तो पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों को लगता है कि दिस हैज बीन ए गुड एक्सपीरियंस, गुड फुलफिलिंग एक्सपीरियंस. द एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर एंड द लर्नर आर इक्वली इंपॉर्टेंट. क्या क्लासरूम से में जब घुसे और क्लासरूम से जब बाहर निकले, विद्यार्थी को लगा कि हाँ उसने कुछ ग्रहण किया, कुछ नई बातें सीखी, उसको कुछ उसके ज्ञान में कुछ इजाफा हुआ, कुछ बेहतर सोचने का उसके कुछ पदार्थ मिला, टीचर को भी लगा कि हाँ हमने आज कुछ अच्छा काम किया. सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस. Here it can vary from day to day. यहाँ कोई ऐसा नहीं कि आपने सेल्स मार्केटिंग में है तो इतना टारगेट आपने अचीव कर लिया. No. Here it has to be your own emotional fulfillment, कि आपने एज टीचर यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, कुछ नई बातें बताई, कुछ नया सीख करके गए, कुछ नए तरीके से, कुछ नए जज्बे के साथ बताया, बच्चों के लिए भी फुलफिलिंग रहा और आपने उसको पूरे माहौल को सहज बना करके पढ़ाया. सो दैट विल अकाउंट फॉर ए गुड pedagogy, that will be counted as a good pedagogical practice. मतलब pedagogical तरीका, pedagogy का तरीका, पढ़ाने का तरीका ठीक है या नहीं का है, इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? जब आप क्लासरूम से निकले या बच्चा निकला, दोनों के मन में खुशी का भाव,
the entire document puts a lot of emphasis on values and skills. You can say that they form the core of the new policy. It says that, of course, there will be flexibility in curriculum. One opts for some subject, another person opts for certain other stream of subjects. But certain subjects and skills should be learned by all the students to become good, successful, innovative, adaptable, and productive human beings in today's rapidly changing world. When it says rapidly changing world, I think it is more in the context of technology, environment, consumerism, connectivity, proficiency in languages is essential. If you go back to the ancient period, if you go back to Nalanda, Vikramshila, and other such ancient universities, you will find that at the very initial level, at the very elementary level, there is a lot of focus on learning Sanskrit grammar. What does it do? It makes logic an important part of a student's thinking. यदि किसी विद्यार्थी ने छोटी उम्र में व्याकरण के नुआंसेस को ठीक से समझ गए, व्याकरण के तोड़ जोड़ को, उसके गणित को ठीक से समझ गए, तो उसके मन में उसको एक इंटरप्रिटेशन का टूल मिल जाता है, बाकी चीजों को भी समझने में उसको मदद मिलती है. So when it says that proficiency in languages is essential, it means that how the sentences can be constructed, both when we think, when we speak, and also when we write, with following proper grammatical tools. हिंदी में लिख रहे हैं या अंग्रेजी में लिख रहे हैं, अशुद्धियों को कम करेंगे, त्रुटियों को कम करेंगे. वह जो ज्ञान होगा, वह जो व्याकरण का ज्ञान है, वह बाकी क्षेत्रों को भी समझने में आसानी दे. और उसके अतिरिक्त जो बेसिक प्रोफिशिएंसी है लैंग्वेज में, उसके अतिरिक्त साइंटिफिक टेम्पर, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग. ऐसा नहीं कि टेलीविजन वाले ने कुछ कह दिया और आपने विश्वास कर लिया. नो. ट्विटर ने कुछ कह दिया, आपने विश्वास कर लिया. फेसबुक ने कुछ कह दिया, आपने आंख मूंद के मान लिया. Try to find corroborative evidences even before you form an opinion on any issue. You should tell your students to do likewise. कि आप evidence based thinking कीजिए, तथ्य के आधार पर सोचिए. There should be creativity and innovativeness. उससे क्या होता है, आप नए तरह से काम करते हैं, प्रयोग धर्मी होते, अलग अलग ढंग से सोचने की कोशिश करते हैं. You should also have a sense of aesthetics and art. ऐसा नहीं कि कंज्यूमरिज्म और टेक्नोलॉजी के साथ बहुत तेजी से भागते 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 आपने एस्थेटिक्स का सेंस को वीक कर लिया, सिमेट्री के सेंस को वीक कर लिया. You can't differentiate between a good art and a bad art, good music and a bad music, good literature and a bad literature. These are very important. There should be focus on proficiency on oral and written communication, health and nutrition, physical education, wellness, fitness, sports. Look at the term wellness. Now, this is an idea which is coming up greatly. ऐसा नहीं कि आप बीमार हैं तभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तभी तब आप कुछ उपचार कर रहे हैं. स्वस्थ रहने के लिए भी कई तरह के उपचार होते हैं. स्वस्थ रहने के लिए भी कई तरह के उपयोग है. आप स्वस्थ इसलिए रह रहे हैं कि आप बीमार न पड़े. बीमार पड़ के उपचार कराने से अच्छा है कि स्वस्थ रहें और बीमार को दूर भगाएं. सो दिस एम्फेसिस ऑन वेलनेस. अभी आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है कुछ वर्षों से, एंड योगिक एक्सरसाइजेस, योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस हैव बिकम सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड. और यह मान करके चलिए कि यदि वो बहुत ऑल परवेसिव हो जाएगा और ठीक ढंग से लोग काम यदि उसको फॉलो करेंगे, तो यू कैन इमेजिन
the saving that we can get in the cost of treatment, हॉस्पिटल्स पर कितना भार कम होगा, ट्रीटमेंट का भार कितना होगा यदि ठीक से लोग नियमित रूप से योग और प्राणायाम शुरू कर दें। डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, फ्यूचरिस्टिक बता रहे हैं कि भाई कोडिंग का प्रचलन शुरू हो गया है, बहुत कोडिंग की आवश्यकता पड़ रही है टेक्नोलॉजी की। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, डिजिटल लिटरेसी, ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं तभी आपको डिजिटल लिटरेसी। एवरीवन, every student, every teacher, everybody in the system should have a minimum digital literacy level so that the policies of the government or even for our day-to-day teaching learning process, we can expedite the entire thing. We can make things more accessible. अभी कोई किताब, पुरानी किताब है, उसका पीडीएफ मिल जाता है, पहले उसको फोटोकॉपी कराते थे लोग, अब आपने पीडीएफ शेयर कर दिया, बच्चों के बीच में जितना पेज चाहिए उतना उठाएगा, उतना ही पढ़ लेगा। आपने 50 बच्चे हैं, आपने एक पीडीएफ शेयर किया, 50 बच्चों को एक साथ मिल गया। ऑनलाइन लर्निंग के टाइम में बहुत सारे टीचर जो शुरू में कंप्यूटर यूज करने से घबराते थे, ऑनलाइन मीटिंग नहीं समझ में आते थे और लोगों को पता भी नहीं था, वही टीचर सब बताते हैं कि they are very comfortable with Zoom or Google or other modes of video conferencing. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता पड़ी, लोगों ने थोड़ा बहुत उसको सीखना शुरू कर दिया। Digital literacy is very important for sustaining the modern educational infrastructure. Gender sensitization, जो वैल्यूज समाज हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, समाज जिन चीजों की हमसे अपेक्षा कर रही है वह हम विद्यार्थियों को बताएंगे कि पुरुष है तो स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष के प्रति, अलग अलग लिंग के प्रति हम कैसे सेंसिटाइज होते हैं, हम दूरियों को कैसे कम करते हैं, हम कैसे डाइवर्सिटी को एप्रिशिएट करते हैं, हम कैसे जेंडर इक्वालिटी की बात को अपने दिमाग में फॉर्मुलेट कर सकते हैं। यह काम पुरुष कर सकता है तो इसको स्त्री भी कर सकती है, पुरुष नौकरी कर सकता है तो स्त्री भी नौकरी कर सकती है, पुरुष को जैसे शिक्षा का अधिकार है वैसे स्त्री को भी शिक्षा का अधिकार है। कैसे हम एक सिम्बियोटिक, एक होलिस्टिक रिलेशनशिप को, एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते। सिटीजनशिप स्किल्स एंड वैल्यूज, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप स्किल्स। अब यहां पर नागरिक से अपेक्षा की जा रही, एज ए सिटीजन यू आर माइंडफुल ऑफ योर राइट्स एज वेल एज द राइट्स ऑफ अदर्स। ऐसा नहीं कि आपने अपने अधिकारों को तो खूब देख लिया जी और आपको किसी ने गाली दी, आप नाराज हो गए, आपने गाली दी, आपने बोला ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसा नहीं होगा। आपको एक दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना है। और अब तो सोशल मीडिया है, एक ही स्ट्रोक में आप यू कैन हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ, यू कैन सेंड आउट मैसेज टू मिलियंस ऑफ पीपल। वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल not to hurt the rights of other citizens. चाहे आप सड़क पर चल रहे हैं या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाल। Citizenship skill very important and that should be combined with a value system. Knowledge of India, including Indian knowledge systems which sustained themselves for decades and years and centuries together. To what extent those knowledge systems can be useful for the modern citizenry, modern system, modern world? हम उस अध्यात्म हो सकता है या किसी खास स्किल की बात हो सकती है, उसको हम
किस प्रकार से अपने आधुनिक जीवन में उसको उतार सकते। अवेयरनेस अबाउट, अब इन्वायरमेंटल अवेयरनेस स्प्रेड करना है। वेद में, शास्त्रों में कई तरह की बातें की गई हैं वातावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में। हम मॉडर्न प्रॉब्लम्स को भी बताएं और वहां जो सॉल्यूशंस है उसको भी, उसकी चर्चा भी करें। वाटर एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, current affairs and knowledge of critical issues and priorities to be given to the ideas of social justice, क्योंकि हमारे संविधान में है, हमें वह बताना भी है बच्चों को कि सामाजिक न्याय क्या चीज होती है, समता क्या बात होती है, साइंटिफिक डेवलपमेंट किसको कहते हैं, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, व्हाई शुड वी बी कल्चरली सेंसिटिव, हम कैसे अपने धरोहर को, विरासत को प्रिजर्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली टू डेवलप ए सिटीजन हु इज कंपैशनेट, मोरल एंड रिस्पॉन्सिबल। नाउ वी कम टू a historical analysis, and this is somewhat different from what we have been studying till now. What was Gandhi's focus on education? How did he look at skills? What were his priorities about skills? यदि किसी को गांधी की आत्मकथा पढ़ने का अवसर मिले तो गांधी कहते हैं that very early on in his life in South Africa, he got a chance to read Leo Tolstoy's Unto This Last. While he was traveling in a train from one town to another, Leo Tolstoy had written, or the conclusions that Gandhi drew from Leo Tolstoy's book was, Gandhi says there are 3 conclusions or suggestions in the book. 1, good of the individual is contained in the good of the community. Gandhi said, I already knew this principle, कि व्यक्ति का भला समुदाय के भले में निहित है। ऐसा नहीं हो सकता है कि समाज पीछे रह जाए और व्यक्ति आगे, वो आपको पूरा खींच लेगा। समाज के साथ चलना। Second, everyone, whether he is a barber or a lawyer or a doctor or a teacher, has the same right to earn his livelihood from his profession. Gandhi said, I had dimly realized it, कि यदि कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई नाई है, कोई चर्मकार है, सबको अपनी आजीविका अपने प्रोफेशन के थ्रू इकट्ठा करने का, ग्रहण करने का समान अधिकार है। इसका अर्थ यह हुआ कि सब कार्य एक है। डिवीजन जो है लेबर का, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं। He said that I had dimly realized this principle. And third was that a laborer's, a life of labor, a life of physical labor is the life worth living. Gandhi said this idea had never come to my mind. And I sat down, calculated in my mind how to put this idea into practice. जब गांधी ने अंत्योदय शब्द का प्रयोग करना शुरू किया, सर्वोदय अंत्योदय, तो अनटू दिस लास्ट का प्रभाव था, जॉन रस्किन का प्रभाव। तब गांधी ने इस प्रभाव के अंदर आकर के फिनिक्स में सहयोगियों, मित्रों के साथ मिलकर के एक सेटलमेंट बनाया, फिर नटाल में बनाया, फिर हिंदुस्तान आए तो साबरमती में बनाया, सेवाग्राम में बनाया। यह जो 4 प्रोटोटाइप है, नटाल का, फिनिक्स का, सेवाग्राम का, साबरमती का, यह
एक कम्युनिटी लिविंग में, एक समुदाय में रह करके हर तरह का काम करना है। किचन का काम भी करना है, झाड़ू भी करना है, टॉयलेट भी क्लीन करना है, किसी भी काम को छोटा नहीं सोचना है। गांधी को लगा कि इससे बेहतर शिक्षा नहीं हो सकती, जहां पर आदमी अपने ईगो को, अहंकार को त्याग करके बैठ करके हर तरह का चरखा भी बुन रहा है, खाना भी बना रहा है, टॉयलेट भी क्लीन कर रहा है, स्किल भी अपना डिस्प्ले कर रहा है। Gandhi's basic ideas on education started generating from the early decades of 20th century. यहीं से वो जनरेट होना शुरू। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में चरखा को कंपलसरी किया गया सत्याग्रहों के लिए, वहां से भी एक तरह की क्या विचार बनता है। लेकिन जब 1937 में कांग्रेस की सरकार, 7 में तो कांग्रेस की सरकार बनती है, 8 में कोalition, मतलब 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। और चूंकि शिक्षा प्रांतीय हिस्से में था, उसको उसकी नीति बनाने का भी जिम्मेदारी थी। तो गांधी ने 31 जुलाई 1937 को हरिजन में एक निबंध लिखा, एक अपने विचार प्रस्तुत किए, दैट लिटरेसी इज नॉट द एंड और गोल ऑफ एजुकेशन एंड टू सम एक्सटेंट इट शुड नॉट बी सीन इवन एज द बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन। जो साक्षरता है उसको शिक्षित होने के, एजुकेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए कि यहीं से शिक्षा शुरू हो रही या यही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य कुछ और है और यहाँ से शुरू भी नहीं हो रहा है। बहुत तरह का एजुकेशन या लर्निंग शिक्षित होने से पहले से भी शुरू हो जाता है। 17 अक्टूबर को उन्होंने एक और एसे लिखा कि हमारा उद्देश्य सकारात्मक कार्य होना चाहिए। गिरा दिया आपने। हमारा उद्देश्य रचनात्मक कार्य होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वह कौशल पर आधारित हो। और उसी बहाने उन्होंने चरखा के प्रयोग को भी, उनके महत्व को भी आगे बढ़ाया। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रख करके जो गांधी लिख रहे थे हरिजन में, और उसी समय में एक नवजीवन स्कूल था, उसका कोई फंक्शन होने वाला था, तो गांधी ने बोला कि इस फंक्शन में आप, वर्धा में ये फंक्शन होने वाला था, कि इसमें आप शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस पर भी चर्चा कीजिए। तो 2 दिवसीय गोष्ठी हुई, जाकिर हुसैन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। गांधी ने उससे पहले एक लेख लिखा, उनको बताया कि ये मेरे सुझाव है जी, इस पर आप विचार कीजिए कि जो लोग हायर एजुकेशन अंग्रेजी में पा रहे हैं और वह वर्ग जो कि उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है या अशिक्षित रह गया, उन दिनों के बीच में देयर इज ए परमानेंट डिवाइड। इसीलिए यह वर्ग जो हायर एजुकेशन पा रहा है वह अपने ज्ञान को इस वर्ग को नहीं दे पा रहा है, बिकॉज देयर इज ए परमानेंट गैप, डिस्टेंस, डिवाइड बिटवीन द टू ग्रुप्स। और दूसरा घाटा यह हुआ है दैट लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क अमंग दिस एजुकेटेड पीपल इन इंग्लिश मीडियम, it has made them unsuitable for productive work and also rendered them physically weak. उन्होंने बोला कि गोष्ठी इस बात पर भी विचार करें। उन्होंने दूसरा सुझाव दिया that primary education should be of a minimum of 7 years and it should be entirely in the mother tongue of the individual, जहां जनरल नॉलेज पर भी फोकस हो, and the learning should be through the medium of local skills. जो भी जिस क्षेत्र में वह बच्चा पढ़ रहा है, जिस क्षेत्र का वह बच्चा है, वहां जो कौशल महत्वपूर्ण है उस कौशल को सीखे। He should inculcate, he should learn those local skills. And then he said कि हायर एजुकेशन कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को पाना चाहिए, कितने लोगों को जा सकते हैं। He said that it should depend on the requirement of the country and resources available in it.
बट प्राइमरी एजुकेशन तो सबको दो, लेकिन किस तरीके से दो। इसके बाद वहां पर वर्धा में गांधी जी का भाषण भी हुआ। गांधी जी ने इन चीजों को रिटेरेट किया। गांधी जी ने यह भी कहा कि जो बच्चे अपने स्किल के द्वारा, आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी के द्वारा कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ क्राफ्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट कैन बी ऑल्सो सोल्ड इन द मार्केट। वो उसका एक इनिशियल अर्निंग भी हो सकता है। और मदर टंग से पढ़ेंगे तो उसका लर्निंग स्पीडी होगा, ज्यादा ओरिजिनल होगा। एंड थर्ड थिंग दैट ही सेड वाज दैट लर्निंग द लोकल स्किल्स will make him proud of his region, proud of his forefathers, proud of his customs, proud of his local culture. रूटलेसनेस नहीं है। ऐसा नहीं कि जड़ से कट गए, अपने ही क्षेत्र के प्रति, अपने ही भाषा के प्रति, अपने ही समुदाय के प्रति हीन भावना से ग्रसित हो। So in some way or the other, you find echoes of the Wardha scheme in the new education policy also, in NEP 2020. So, of course, in a different context. For example, in the national education policy, the level of skill is of a higher class. कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल elementary पर, लेकिन आगे जाकर के 8 से 10 साल के बीच में आप कुछ skills impart करेंगे। लेकिन गांधी के ब्लूप्रिंट में बिल्कुल शुरू से होगा। नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है कि लोकल स्किल्स सबके लिए कंपलसरी होगा, बट इट इज डिजायरेबल। इन गांधी जी स्कीम ऑफ थिंग्स, ऑल प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी इम्पार्टेड थ्रू लोकल स्किल्स, बेस्ड ऑन लोकल स्किल्स ओनली। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पुट्स लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन मल्टीलिंग्विज्म and on mother tongue. Gandhi's scheme said that only mother tongue should be the medium of communication as far as primary education is concerned. With this slide, we come to the end of the discussion. I hope my colleagues, my teaching colleagues would like to take the discussion forward. Participants, you have any question to ask? Participants? सुबह मैम लग रहा है कोई सवाल नहीं है। हाँ ठीक है, तो फिर हम लोग एंड करते हैं। नहीं, पार्टिसिपेंट चैट बॉक्स में कुछ लिखे, चूंकि अनम्यूट तो हमने किया नहीं उनको, एक बार अनम्यूट कर दें पहले उनको। अनम्यूट करके देखिए। राइट दे दिए हैं सर अनम्यूट करने के। कर दिया मैडम, कर दिया। आप देखिए, कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मैंने कर दिया, पार्टिसिपेंट्स का भी हो रहा है और मैं चैट बॉक्स भी देख रही हूँ, बट राइट नाउ देयर इज नो क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है नेहा। सर प्लीज टेल मी अबाउट न्यू पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज। भुवन जी, एक पार्टिसिपेंट पूछ रहा है, प्लीज टेल मी अबाउट न्यू पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज। नेहा मिश्रा। I think Alok Pandey ji will be in a better position to answer that question. वो हिंदी भाषा के हैं। See, if you look at the national education policy, it doesn't give answer to specific queries like that. ये कुछ एक outline बना करके दे रहा है आपको कि इस तरह का pedagogical concerns है हमारा। For
a particular language is to be taught, that is not mentioned here, but certainly what it says is that foundational principles of language should be available to the students in his very early childhood. अब उसको कैसे दिखाएंगे, बहुत if the grammar is very difficult, then the student will find it very difficult to grapple with it. तो आप कैसे उसको जो मूलभूत अक्षर का ज्ञान है, शब्द का ज्ञान है, छोटे वाक्य बनाने की प्रक्रिया है, शुद्ध वर्तनी का है, हैंड राइटिंग का है, उसको सोचने का है, यह बातें आप उस पेडागॉजी के थ्रू उसको बच्चे को बताएंगे एट द अर्ली लेवल ऑफ एजुकेशन. एट द हायर लेवल, द लेवल इन विच वी colleagues may be teaching, language, the importance of language should not be lost sight of. मेरे पास कुछ बच्चा का असाइनमेंट आता है, उसमें मैं लैंग्वेज करेक्शन भी कर देता हूँ. इसलिए नहीं करता हूँ कि उसको नंबर कम मिल जाएंगे, इसलिए कि वो यह समझ ले कि वो गलत लिख रहा है. That part is, I think, desirable and expected from the teaching community at the higher education level, at the higher level. But at the primary level, at the foundational level, since the NEP puts emphasis on foundational literacy and multilingualism, it is important that fundamental basis of language, linguistics must be told to the students. उनको ये बताना चाहिए कि शुद्ध कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है. बाकी जो भाषा वैज्ञानिक होंगे, जो लैंग्वेज एक्सपर्ट होंगे, आई थिंक दे विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू आंसर योर क्वेश्चन. भुवन सर, आपने सही बताया बिल्कुल. और किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो? तो विभा जैन मैम ने रेज किया है हैंड. मैम पूछिए आप. विभा मैम, अनम्यूट योरसेल्फ. सर नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है कि वर्धा स्कीम के जैसे गांधी जी ने 1937 में ही ये बात कह दी थी कि जो एजुकेशन का फॉर्मेट है वो इस तरह होना चाहिए, पर सर इतने साल हो गए आजादी को, फिर भी जो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड है उसका भेदभाव भी नहीं खत्म हो पाया, ना कोई हम अपनी एजुकेशन में बच्चों को स्किल के साथ जोड़ पाए. इतने साल निकल गए, जबकि 1937 आजादी से पहले ही ये सब कुछ सोच लिया गया था. तो सर इसका कुछ रीजन क्या हो सकता है? I think the reason lies not so much at the level of policy, but at the level of implementation. मसलन यदि आप स्कूलों में जाएंगे बच्चे का एडमिशन करवाने की, तो वहां एक अलग तरह की प्रतिस्पर्धा है कि हर महीने में बच्चे के टेस्ट में कितने नंबर मिले. आप यदि इफ यू आस्क द स्कूल कि भाई आप स्किल बेस्ड स्किल क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते, नो गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड यू, नो पॉलिसी हैज स्टॉप्ड यू, हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ स्किल के बारे में रहता है. आप बच्चों को पूरा हिंदुस्तान दिखाइए, जगहों पे खेत पे ले जाइए, ऐसे जगह पे ले जाइए जो उन्होंने कभी नहीं देखा, उनको पता चले कि कृषि कैसे होती है, कैसे सिखाई जाती है, चीजें कैसे होती है. उनका एक कहना है कि नॉर्मली पेरेंट्स डू नॉट रेज दिस कंसर्न्स. उनको ये लगता है कि बच्चे को गणित में अंक कम क्यों आ गए. तो इसमें कौन किसको बोलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है. अब जैसे मान लीजिए आपने एक पेपर इंट्रोड्यूस किया सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क करके, और सीबीएसई के करिकुलम में बहुत पहले से 3 4 दशक से उसमें स्कूल के लेवल पर देखेंगे तो कुछ खास काम नहीं होता. कुछ प्रोजेक्ट दिया, नंबर मिल गए, बच्चा पास कर गया, उसको क्लियर. जबकि उसका यदि आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में या एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई. माय पॉइंट इज कि जब आप एक पॉलिसी गाइडलाइन है, जब यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी भावनाओं को ध्यान में रखता है. जैसे बीएड कॉलेजेस में, उन जगहों पर गांधी का जो बेसिक एजुकेशन है
वहां पर स्किल ट्रेनिंग क्राफ्ट का, लेकिन वो एक एडिशनल क्राफ्ट का, ठीक है, गांधी के कुछ चीजें हो सकता है कि हमको इम्प्रैक्टिकल लगे, इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है कि भाई हर बच्चा को आप मदर टंग में कैसे एजुकेट कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप कुछ तो जो स्किल पर फोकस है कि हमारा जो देश है वो स्किल बेस्ड कंट्री, हर क्षेत्र में आप जाएंगे देखेंगे कि कुछ ना कुछ नई तरह की चीजें हैं, वहां पे नई तरह से काम होता है। आप कहीं किसी जगह पर जाइए जहां पर कि चूड़ियां बन रही हैं, आप हैरान होंगे कि लोग कितने आराम से चूड़ियां बना रहे हैं। वह स्किल किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ करके नहीं हो सकता है। तो गांधी जी का यह कहना है कि जिस इलाका में वह ट्रेडिशन, वह कस्टम है, वह स्किल है, उस इलाके के बच्चों को उसकी शिक्षा के साथ उस स्किल को भी सिखाना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि शिक्षित होने से हमें वो स्किल खराब लगने लगता है। उनको ये लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो स्किल से अलग नहीं है, जो स्किल हमारे फोर फादर्स के पास, तो उसको हीन भावना नहीं होगी। अक्सर क्या होता है कि पढ़ने लिखने से लोगों को लगता है कि हम तो अब ग्रामीण परिवेश से कट गए जी, अलग हो गए जी, अब हमारा रास्ता अलग हो। एजुकेशन शुड नॉट मूव यू अवे फ्रॉम योर लोकल कस्टम्स, फ्रॉम योर स्किल्स। और आप देखेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी हो या हायर, देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी विद इन द कंट्री। कुछ शिक्षण संस्थान बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बहुत नीचे चले जाते। पॉलिसी सबके लिए एक ही है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, रिसोर्स को स्किल करने की बात आती है, ट्रेन करने की बात आती है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिवेशन क्या है, ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट। आई होप कुछ न कुछ हम लोग हमारे वार्तालाप से कुछ बातें निकल करके आई होंगी। Any more questions, I please? think, और प्रश्न पूछना? विभा जैन has raised her hand. विभा जी का सवाल जवाब दे दिया आपने अभी। अच्छा, विभा जी का, विभा जी कुछ और भी है आपके मन में, और यू वांट टू कैरी ऑन दिस डिस्कशन फर्दर, कुछ इसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं आप? आर यू एबल टू हियर मी? ठीक है, शुभा जी, आलोक जी, अब इसको। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब किसी के मन में कोई सवाल नहीं है, तो सुबह में आप थैंक यू करें। अच्छा, So we have come to the end of this session. एक मिनट, ये चारू गोयल ने शायद उठाया, बस चारू जी आपके मन में कुछ है क्या? अनम्यूट करके बोल रहे हैं आप चारू जी, आपने रेज हैंड किया अभी। चलिए, मुझे लग रहा है कि गलती से हो गया होगा रेज हैंड। So we have come to this session, and I take this privilege of thanking Dr. Bhuwan. You have spared your invaluable time from your busy schedule, and as usual, you have really enlightened us and enhanced our understanding on the subject, and your talk was very commendable. So thanks once again, Dr. Bhuwan. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू, थैंक यू मैडम। मैं तो एसपीएम में कई बार बोल चुका हूँ। थैंक्स टू शुभा सिन्हा जी एंड आलोक जी, बहुत पुराने परिचित हैं, ऐसे व्यस्त रहते हैं आलोक जी, बहुत व्यस्त रहते हैं, तो हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती है। नहीं सर, आलोक जी बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव भी है और व्यस्त भी है। वो इतना टाइम निकाल रहे हैं, वही काफी है। आप सीनियर हैं सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत thanks to all my colleagues here, all teaching colleagues here for being so patient. Thank you so much. Okay. I am ending the session. कल आप सबकी छुट्टी है, कल कोई क्लास नहीं होगी, फिर हम लोग थर्सडे मिलेंगे 2:30 बजे। आपको जो रिसर्च पेपर तैयार करना है वो आप रिसर्च पेपर तैयार कर लेंगे। ठीक है आलोक जी, ठीक है मैम, भुवन जी, थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू भुवन सर, थैंक यू सुभा मैम। अब बंद कर रहे हैं।